Hello, hi everyone. Welcome to this session. This is yet another editorial analysis, students. In this, we are going to talk about this topic, and the topic is the politics of pain. Right. Now, students, what is this, right? Politics of pain, what about it? So, we are going to talk on this topic, various aspects of this topic. For example, medical science can only tell us so much. To understand pain, we need the cultural tools of history, philosophy, art, and everything. Now, pain experience is not a human universal. अब हम जो है वो ऐसा नहीं है, like कि pain experience is not a human universal. That is, it has a history. It changes over time and from place to place. Elaborating the history exposes the politics at the core of attempts to measure, validate, or dismiss the experience of people in pain. So ये कितना measure, मतलब basically measure है कि नहीं है, कितना है, किस बिना, ये हम बोल रहे हैं दो टाइप से होता है, right? I'll just use the highlighter. So language of pain, if we go back to history, antiquity means history पे अगर हम जाएं, दो टाइप के होते हैं, emotional and physical, right? Two types of pain, राइट. इट कैन बी, अगर हम टाइप्स में करें तो ग्रीफ मतलब दुख, गुस्सा, डिस्पेयर, होपलेसनेस, सॉरो, सैडनेस, राइट. फिजिकल पेन, आपको कोई चोट लग जाए तो, राइट, ऑल दीज थिंग्स. और अलग अलग लैंग्वेज में इनके अलग अलग नाम हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आई एम इन पेन बोलना है तो आप ग्रीक में बोलोगे डोलोर, लेटिन में बोलोगे वजह, राइट. अरेबिक या इसमें हिंदी फारसी में दर्द हम लोग बोलते हैं, राइट. चाइनीज में टोंग, एक्सेट्रा, राइट. ओड्यून इन ग्रीक, दैट. Also, there's a rich history, right, of this word therein or wherein I would say it could not be uttered, was nonetheless expressed by documenting the historically situated processes of experiencing and expressing types of pain. It is possible to show both an enormous variety with while insisting upon a long history of the braiding of the emotional and physical. Right, that. Now, this has the effect in turn of implicitly denaturalizing and situating present day experiences of pain and disrupting 2 centuries of modern medical expertise. Now, take for example the concept of grief in ancient Greece. इट इज़ वन ऑफ द की टर्म्स फॉर ग्रीफ और डिस्ट्रेस. अगर हम बोल रहे हैं इसके बारे में बात करें, दैट इज़ राइट, ग्रीस के लिए एक्यूज, ये जो वर्ड है ये हमने डिस्ट्रेस है. ग्रीफ मतलब क्या हो, ग्रीफ अगेन दुख हुआ. एट द हार्ट इन द इलियाड, राइट. इलियाड इज़ अ फेमस पोएट एंड पोएम, जिसके नाम भी वही है, और ये फेमस हीरो ओडिसी आपने सुना होगा, राइट. दैट एंड वन ऑफ द मैनी वर्ड्स, जो ग्रीक में बहुत सारे वर्ड्स हैं लोग ना. ऑल्दो हम इससे बेसिकली एसोसिएट करते एक दूसरे कैरेक्टर से जो हिस्ट्री में है. इट इज़ ग्रीफ पेन दैट ही embodies in very name. It is the name of his pain that most of the Achilles violent actions are carried out in the final book of the epic, right. जो बुक हम इलियड, Achilles, ओडिसियस की पढ़ते हैं, राइट. सो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, एक डेमी गॉड है, not literal, not human. Yet the Iliad framed ideas and practices of virtue, belief, warfare, ritual for centuries. It was to Greek self-fashioning the classical period. It was the central context of Plato's Republic. Greeks learned how to do pain. They learned it in part and through Achilles. कि भाई अगर आपको तकलीफ तो भी आप उसके थ्रू कैसे you can go through. See, the overall, I would say, summary of this particular paragraph is, first of all, politics of pain means कैसे उस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए भी, दूसरे के नुकसान के लिए भी, हर चीज़. तो दो टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट यू फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू नो. डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट वर्ड्स यूज़ होते हैं, राइट. एंड अगर हम प्रेजेंट डे एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करें कंपेयर टू हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, तो अगेन वो काफ़ी डिफरेंस है. और उसका एग्जाम्पल हमने दिया है बाय दिस फेमस कैरेक्टर्स एशिलीज, ओडियसियस, इलियड. ये कैसे वो उनमें भी सारे वर्च्यू थे इन स्पाइट ऑफ they knew how to do pain, basically how to get away and how to manage that thing, isn't it? So that, now इसमें कुछ words हैं students जो काफ़ी interesting है, like philosophy, the study of ideas and beliefs about the meaning of life, right. Antiquity, right. Antiquity means पुराने ज़माने का, ancient past, right. That conflated means combine. Grief मतलब sadness, anguish मतलब गुस्सा, right. Pain या anger, suffering, that. Despair means hopelessness. एंड वर्नैक्युलर हम जनरली बोलते हैं, वर्नैक्युलर मीडियम मीन्स बेसिकली एक लैंग्वेज स्पोकन जो किसी लोकल एरिया में बोली जाती है. सो लोकल लैंग्वेज, राइट, लोकल लैंग्वेज. Iconography are visual images and symbols used in a work or of art or the study or interpretation of these. Now, right, so that कि हम कुछ symbol से या images से हम किसी चीज़ को study करते हैं. Semantics means meaning of words, meaning जो भी चीज़ मैं highlight कर रही हूँ students वही exact meaning है.
Ineffable is something which is great or too great to describe in words, right? Something very, very spectacular. That is what we will say is ineffable. ना इन सब वर्ड्स पे मैंने क्विज बनाया है स्टूडेंट्स. तो सॉरो, अगर मैं सॉरो बोल, सॉरो का क्लोजेस्ट वर्ड मीनिंग क्या होगा इन सब में? ये सॉरो मतलब दुख, तो जॉय तो नहीं हो सकता. रिजॉइस मतलब भी खुश होना, लविएबल भी पॉजिटिव वर्ड से. एंग्विश्ड, एंग्विश्ड मीन्स गुस्सा होना या दुखी होना. सो बी विल बी इट्स सिनोनिम. ऑल राइट, लेट्स कम टू सेकेंड वर्ड, क्लेम. कोई चीज को क्लेम करना. सो या, सो क्लेम, क्लेमिंग. सो क्लोजेस्ट वर्ड इज व्हाट? A closest answer? यस, डिनायल मतलब मना करना, गुस्सा करना, एंगर, ये तो नहीं हो सकता. आंसर, क्लेम इज टू आंसर समथिंग, और एलिगेशन किसी पे. क्लोजेस्ट तो यही है, ये भी बहुत क्लोज नहीं है बट एटलीस्ट क्लोजेस्ट, राइट? क्लेम समथिंग. ना इनॉर्मसली, इनॉर्मसली वैसे क्लेम करना, एज फॉर एग्जाम्पल आई एम क्लेमिंग दिस थिंग टू बी माइन, कि भाई आई एम क्लेमिंग ऑन दिस, कि ये मेरी चीज़ है. तो एक्चुअली बोलना, टू असर्ट योर सेल्फ, बट बोलने में आंसर थोड़ा क्लोजेस्ट. इट्स नॉट एग्जैक्ट सिनोनिम ऑल दो स्टूडेंट्स. ठीक है. इनॉर्मसली, इनॉर्मसली आई हैव गॉट इनॉर्मसली more work than others, or I have got enormously more respect, enormous respect than others. So enormous means a lot. So what will be the closest word of enormous? Yes. That is highly, right? Implicitly. Implicitly means indirectly. So implicitly will be? Yes. So essentially, can we say essentially? Right? वैसे तो indirectly है, but compared to what? This. Right. Right. Implicit, I would not say specific, Suchanda, but it means something indirectly. Like I can infer that. I can understand that. Right? Or paragraph suggests this. So essentially tells you this. Merely. Merely is hardly, isn't it? Merely would be hardly. Correct? Right? This is merely, if I say, this is merely a book which has, let's say, 10 pages. So this is hardly a book. Book hoti hai, so at least they should have 100, 150, 200 pages minimum, isn't it? Okay, students, there's 25% discount going on for CAT 2023 students. It is valid till tomorrow, right? Till 18th, I mean. So you have, right, just one more day to avail this offer. You can use the code DA Live to avail this discount at these prices. And these are topper students. We had a scholarship test on 15th, in which top 100 students have got this much scholarship. Now if you could not participate in that, तो आप 29th को भी कर सकते हो by, like, again, like, taking participate 29th 12 to 1 p.m. and then try to be among top 100. You can take it later also to get an idea, but हाँ उसमें अभी रैंकिंग काउंट नहीं होगी कि आप बाद में ले रहे हो, एटलीस्ट एक आइडिया तो मिल ही जाएगा. सो मेक श्योर जनवरी 18th आप देख सकते हो सारे फैकल्टीज. इसमें वर्बल विल बी टेकन अप बाय मी
For example, Lokesh sir, Ritu ma'am. Then maths and DLR will be taken by Nishant sir, Samir sir, right? Raman sir, Ashish Kumar sir will take LRDI, Ronak, and Ravi Prakash sir will take this. Right, then another batch for perfect score batch for repeaters is also started from January 16th. वो भी आप कर सकते हो. एक GDPI के लिए बैच स्टार्ट हुआ है फॉर 2022 10th जनवरी से, वो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. एंड एक लाइट सब्सक्रिप्शन है विच मीन्स यू कैन ओनली गो फॉर मॉक स्टूडेंट्स. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. एनी क्वेश्चन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. Yes. Yeah, we are done, student. Those who have just joined can again read this article. We generally take or mostly take a lot of interesting articles in our editorial. तो आप ये फिर से पढ़ सकते हो. मैं इसको end की तरफ छोड़ रही हूँ because this is what we have done. और हम इस तरह के topics लेते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने भी मिलता है हमें in general, vocabulary and everything else. Right? Any questions, any doubts, everyone? Any question, any doubts? Nothing? All right. Thank you so much, everyone, for joining. I'll see you soon with the next session.